Hey guys, today we are going to make donuts and here are the ingredients we need. So first we'll prepare our dough. तो डो के लिए हम एक बाउल में हाफ कप ल्यूकवार्म मिल्क लेंगे. अब इसमें हाफ टेबल स्पून शुगर डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है. एंड देन वी हैव टू ऐड हाफ टेबल स्पून ऑफ ईस्ट. Before adding yeast, make sure that the milk is not too hot. Now add half tablespoon of milk powder and mix everything really well. इस मिक्सचर को हमें 10 मिनट तक रेस्ट करने देना है. डो के लिए 1 कप मैदे में 2 टेबलस्पून शुगर और हाफ टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे. दस मिनट बाद मिक्सचर ऐसा दिखना चाहिए, अदरवाइज आपका ईस्ट रेडी नहीं है. अब मैदे में ईस्ट ऐड करना है और फिर हम लोग इसका एक डो बना लेंगे. यू कैन ऐड मोर मिल्क इफ नीडेड. Keep adding oil or butter in between. This keeps our dough soft. अब एक बाउल लेकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लें. आप ऑयल या बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. Now add some butter on top of the dough too. डो को हमें एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देना है. Now take a small portion and roll it. Cut it in shape of doughnuts. Add some butter and leave for 10 minutes. Now I'll fry my doughnuts. फ्राई करने से पहले ऑयल का टेम्परेचर चेक कर ले. Your oil shouldn't be too hot. डोनट्स हमें मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है until it is golden brown. हम देख सकते हैं कि ये डोनट्स काफ़ी सॉफ्ट बने हैं. एंड हियर इज माय फेवरेट पार्ट. वी आर गोइंग टू डेकोरेट आवर डोनट्स. जैसे चाहें अपने डोनट्स को डेकोरेट कर सकते. हियर आई एम यूजिंग डार्क चॉकलेट एंड आइसिंग शुगर एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज डेसिकेटेड कोकोनट. I am using cashews. You can add almonds or pistas, anything you want.